चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। और ये चैप्टर हम शुरू करने से पहले हम थोड़ा वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स ये हम थोड़ा पढ़ लेंगे। सो टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने पहले पढ़ा है। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ये हमने पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटीज याद है? स्केलर क्वांटिटीज का मतलब है दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। कोई डायरेक्शन नहीं है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ये हमने पहले पढ़ चुका है। They have only magnitude and they do not have any direction. एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया था। एग्जाम्पल टाइम, मास, ये सब एग्जाम्पल है। टाइम, मास, स्पीड, they are scalar. Scalar, they have only magnitude. And vector quantities, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है? They have both magnitude and direction. ठीक है? वेक्टर क्वांटिटीज they have both magnitude and direction. As an example हम क्या बोल सकते हैं? Force is a vector quantity. As an example, force is a vector quantity. Then velocity is a vector quantity, etc. ठीक है? स्केलर और वेक्टर हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका है। स्केलर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एम आई राइट? यस सर। यस सर। अभी मैंने क्या बोला? आप लोग सुना नहीं, सुनिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यू लिसन केयरफुली। मैंने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं सर, डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। Vector quantities have both magnitude and direction. Yes sir. ठीक है? Vector quantities have both magnitude and direction. Scalar quantities have only magnitude. ये याद रखिएगा। ये सब तो आप लोग को पता है, फिर भी एक बार याद रखिएगा। अच्छा, अभी सपोज स्केलर क्वांटिटीज होने से स्केलर नंबर कुछ भी है, स्केलर क्वांटिटी सपोज 5, हम 5 को सिर्फ 5 ही लिखते हैं। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज है, तो उसका वैल्यू सपोज 5 है, हम 5 सिंपली 5 लिखने से नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा लिखेंगे? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। A vector is represented by a straight line with an arrow. A vector is represented by a straight line with an arrow. मतलब कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। we'll have a straight line, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और इसमें एक एरो भी रहेगा। ठीक है? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी वेक्टर है, क्या करेंगे? हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और एक एरो देंगे, यहाँ एरो।
ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन gives magnitude. Length of the line gives magnitude and arrow gives direction. Length of the line, magnitude, and arrow gives direction. इस स्लाइड पे मैंने जो लिखा है आप लोग वो पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स 2-3 बार पढ़िए आप लोग। समझ में आया सबको? मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझाऊंगा। अच्छा, समझाने से पहले हम वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, आप ये याद रखिए। A vector is denoted by कोई भी एक सिंबल यूज करेंगे और सिंबल के ऊपर एक एरो देंगे। कोई भी एक सिंबल हम यूज करेंगे और सिंबल के ऊपर हम एरो देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक सिंबल देंगे और सिंबल के ऊपर जब हम एरो देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। ये स्लाइड पे जो लिखा है आप सबको समझ में आया है कि नहीं, एक बार बताइए। ये सर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो मैं एक बार फिर से मैं एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन मैं आप लोग को कर रहा हूँ। सपोज ये एक वेक्टर है ए। सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। दो वेक्टर है। यहाँ देखिए दोनों वेक्टर, अच्छा इसमें देखिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, हाँ ये देखिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है और एक एरो है, दैट इज अ वेक्टर। स्ट्रेट लाइन, a straight line and an arrow, वेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड and arrow gives direction. Length of the line gives magnitude, arrow gives direction. और हम क्या करेंगे, इसको एक सिंबल को, कोई भी एक सिंबल लिखेंगे, उसका ऊपर एरो देने से वो वेक्टर हो जाएगा। कोई भी एक सिंबल लिखेंगे, उसका ऊपर एरो देने से वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ मैंने क्या किया, दो वेक्टर ड्रॉ किया। ये एक वेक्टर है बी, दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। ये देखिए, ये एक वेक्टर है ए, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। दोनों का देखिए एरो सेम डायरेक्शन पे है, बोथ ऑफ देम हैव एरो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का एरो सेम डायरेक्शन पे है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। किसका लेंथ ज्यादा है, ए का या बी का? बी का। बी का लेंथ, हाँ बी का लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। ये ए का लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, ए का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो बी का लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है,
इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, magnitude of B is greater than magnitude of A. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम, यहाँ डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम. सपोज अब देखिए, यहाँ मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, सपोज दिस वेक्टर इज ए, और दूसरा एक वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ किया ऐसा ड्रॉ किया बी. इसमें देखिए यू सी हियर ए एंड बी दोनों का लेंथ सेम है. ए एंड बी दोनों का लेंथ सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, हाँ, ए एंड बी, लेंथ ऑफ ए एंड बी आर सेम, लेंथ ऑफ ए एंड बी आर सेम. लेंथ ऑफ ए एंड बी आर सेम, इसका मतलब है क्या, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए is equals to magnitude of B. ठीक है, हाँ, लेंथ ऑफ ए एंड बी आर सेम, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर सेम. लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? दोनों का डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन ये है, ए का डायरेक्शन ये है, और बी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन. So directions of A and B are different. Yeah, directions of A and B are different. Magnitude of A and B are same. Magnitude of A and B are same क्योंकि length same है, magnitude same होगा. समझ में आया? यस सर, यहाँ तक समझ में. यस सर. अच्छा, अभी देखिए, दो वेक्टर अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, दिस इज अ वेक्टर A and this is another vector B, this is another vector B. ये दोनों वेक्टर बताइए, A and B, क्या मैग्नीट्यूड, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट. हाँ, क्या यह मैग्नीट्यूड, both magnitude and directions are different. Both magnitude and directions are different. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखिए, इसका लेंथ ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा. ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? यस सर. अच्छा, इजी चीज है, एकदम इजी है. आपका स्केलर होने से हम ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है, सपोज टाइम इज 20 सेकेंड, हम ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे. 20 सेकेंड स्केलर होने से हम ड्रॉ नहीं करेंगे, वेक्टर होने से ही हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यस सर. अच्छा, आप लोग ये बताइए, सपोज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, वेक्टर ए is like this, vector B is like this. Vector A का डायरेक्शन क्या है? What is the direction? East. What is the direction of vector B? नॉर्थ. North. और अगर वेक्टर C ऐसा होता है, वेक्टर C, this angle is 45, तो इसका डायरेक्शन क्या बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ओके, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट. इतना समझ में आया? अच्छा, सपोज ये एक वेक्टर है. ठीक है, वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं. एरो आप लोग ने देखा है, एरो रियल लाइफ में, रियल लाइफ एरो यू हैव सीन? यस सर. अच्छा, सो एरो का ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये, इसे हम टिप कहेंगे, टिप. ठीक है, इसको हम टिप कहेंगे, टिप.
ये जो पॉइंट है एरो का, ठीक है। यस सर। टिप, इसे हम टिप कहेंगे। और एरो का ये जो पॉइंट होगा, क्या गया, एक मिनट है, 10 मिनट, क्या गया। एरो का ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, उसे हम टेल कहेंगे, टेल, ठीक है। बैक साइड, एरो का जो बैक साइड है उसे हम टेल कहेंगे, और एरो का फ्रंट साइड जो है उसे हम टिप कहेंगे। ये समझ में आया? सर वो टिप को हेड भी कह सकते हैं क्या? हेड तो कहेंगे, हेड भी कह सकते हैं, लेकिन हम टिप कहेंगे। यस सर, क्लियर हुआ। हाँ, हेड आप कह सकते हैं हेड, लेकिन हम टिप इसलिए कहेंगे क्योंकि वो टिप का जैसा दिखता है। यू कैन टेल हेड आल्सो, हेड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप हेड भी कह सकते हैं, लेकिन हम टिप कहेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा, सपोज ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर, ये लाइन का लेंथ हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द लाइन विल गिव अस मैग्नीट्यूड। अगर हम ये एरो देते हैं तो वो वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसका दोनों है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं, देन इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों है इसका। हाँ, बट इफ वी पुट इट विद इन मॉड, इट्स कॉल्ड मॉड्यूलस, मॉड। ये दो लाइन आप लोग ने पढ़ा होगा, दो लाइन के बीच हम जब भी जो भी लिखते हैं, इसे हम मॉड, मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड, शॉर्ट फॉर्म पे मॉड, मॉड कहते हैं, मॉड। अगर हम ऐसा मॉड लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, इसको मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। Okay, if we write within modulus, then it is called magnitude. And इसका मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड हम बिना एरो से भी लिख सकते हैं। इफ वी राइट विदाउट एरो, एरो के साथ होने से ये वेक्टर हो गया, और अगर हम एरो हटा देते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। हम आइदर हम या तो ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। यस सर। अच्छा, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट याद आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। सपोज ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ए, सपोज ए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। आप अगर क्या करते हैं, ये वेक्टर का एरो आप उल्टा कर देते हैं, मतलब सेम रखा, लेंथ रिमेन सेम, आपने लेंथ सेम रख दिया, एरो ऑपोजिट कर दिया, उल्टा, उल्टा कर दिया, माइनस ए हो जाएगा सर। माइनस ए हो जाएगी, इसे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्सिंग
the direction, reversing the direction of a vector, changes its sign. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है. हमने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया. इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, it will change its sign. So reversing the direction of a vector will change its sign. डन सर. ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये आप लोग को समझ में आया? यस सर. रिवर्स करना. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा. So reversing the direction of a vector changes its sign. अच्छा, एक बार हम फटाफट देख लेते हैं क्या 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 हमने. यहाँ देखिए, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में दोनों है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. ठीक है, इस स्लाइड में आप सबको पता ही है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. एक वेक्टर को हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. ये लाइन का लेंथ जो होगा, लेंथ हमें क्या देगा? लेंथ विल गिव अस मैग्नीट्यूड. एरो गिव्स अस डायरेक्शन. एरो गिव्स अस डायरेक्शन. और इसको हम कोई भी एक सिंबल लेंगे, एक एरो ऊपर देने से वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, जैसा मैंने यहाँ बताया कि ये दोनों वेक्टर देखिए, डायरेक्शन सेम है, लेंथ डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. ये दोनों वेक्टर में देखिए, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है. लेंथ सेम है का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड. और इसमें देखिए, लेंथ डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इज आल्सो डिफरेंट. लेंथ डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इज आल्सो डिफरेंट. अच्छा, कोई भी एक वेक्टर हो, इस पॉइंट को हम टेल कहेंगे, इस पॉइंट को हम टिप कहेंगे. टेल, टिप. मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसा लिख सकते हैं? या तो only like this we can write without putting the arrow over it. We can write magnitude. हाँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, तो वेक्टर का साइन चेंज हो जाएगा. इससे ज्यादा आप लोग को कुछ करना ही नहीं है. सो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. हम देखेंगे वेक्टर में, as I told you earlier also, 3 + 5 may not be 8. ये सब हम बाद में देखेंगे. अभी हम क्या करेंगे, ये पढ़ लेते हैं ना. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. Different types of vectors we have. Number 1 is unit vector. Unit vector. Number 1 unit vector. यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब क्या है? What does unit mean? What does unit mean? यूनिट का मतलब it is a vector whose magnitude is 1. It is a vector whose magnitude is 1. Whose magnitude is, it is a vector whose magnitude is 1. Unit vector, it is a vector whose magnitude is 1.
ओके, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होने से यूनिट वेक्टर होता है। हाँ, ये यूनिट का मतलब ही 1 है। सो यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1. It is denoted by it is denoted by हम कैसे डिनोट करेंगे? It is denoted by हम कैसा डिनोट करेंगे? It is denoted by, just 1 minute. क्या हो गया? हाँ, यूनिट वेक्टर का मतलब The magnitude is 1. magnitude is 1. So unit vector means it's a vector whose magnitude is 1. Unit vector, it is a vector whose magnitude is, it is a vector whose magnitude is 1. It is denoted by, हम क्या करेंगे? कोई भी एक सिंबल लेंगे, सिंबल के ऊपर एक कैप डालेंगे, कैप। ठीक है, देखिए अगर हम सिंबल के ऊपर एरो दिया वो वेक्टर हो गया ना, सिंबल के ऊपर हमने अगर एरो दिया वो वेक्टर हो गया, और सिंबल के ऊपर अगर हम कैप देंगे तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। हाँ, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 1। Okay, so unit vector, it is a vector whose magnitude is 1. It is denoted by a cap. Next, number 2 is a null vector. Number 2, null vector. Null आप लोग ने क्लास 10 पे पढ़ा है, 9 10 सेट पे पढ़ा होगा शायद, null set. Phi null set. null set का मीनिंग क्या है? What does it mean? एग्जिस्ट नहीं करता सर। No, it means it has 0 member. null set का मतलब है उसमें कोई member नहीं है। So null का मतलब 0 है। So null vector means it is a vector whose magnitude, it is a vector whose magnitude is 0. Okay, null vector का मतलब है it is a vector whose magnitude is 0. ये दोनों समझ में है आप लोग का? यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड इज 1. हाँ, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज 1 और इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये आपको याद रखना है, कोई भी एक सिंबल लिखेंगे उसको ऊपर एक कैप दे देंगे, यूनिट वेक्टर। और नल वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो वो नल वेक्टर होगा। ठीक है सर। नंबर 3, नंबर 3, collinear vectors. Number 3, collinear vectors. collinear का मतलब देखिए, को का मतलब सेम है, को का मतलब सेम है, लिनियर का मतलब लाइन है। ये समझ में आया? कोलिनियर, को का मतलब सेम, लिनियर का मतलब लाइन, कोलिनियर। इतना समझ में आया? यस सर।
Okay, so collinear vectors का मतलब क्या है? देखिए definition हम ऐसा लिखेंगे, two or more vectors are said to be collinear. Two or more vectors are said to be collinear if they lie along the same straight line. Okay. Two or more vectors are said to be collinear if they lie along the same straight line. Okay, इसका मतलब है, it means suppose this is one vector A, this is one vector A, this is another vector B, and suppose this is another vector C. All of them lie in the same straight line, so they will be called collinear vector. Here number three, do you understand number three? Yes, sir. In same line, both be. Same line, A, B, and C, all of them lie in the same line. They are collinear vector. Number one, you understood? सी Yes, तो sir. सर ऑलरेडी लिखा है। Huh? Unit vector, you understood? Yes. Okay. Null vector, you understood? Collinear vector. Acha, collinear vector, if you understand, others also will understand. Collinear vector अगर आपका समझ में है तो बाकी भी आपका समझ में आ जाएगा. Number four, coplanar vectors. Just you wait 1 minute, 1 minute. Okay, so coplanar. देखिए, what do you mean by coplanar? अब बताइए. Co मतलब सेम same. Planar मतलब Plain. planar मतलब plain. Co मतलब same. Planar मतलब plain. Plain का मतलब आप लोग समझते हैं? Do you understand what do you mean by plain? Say a piece of paper. आपका जो piece of paper है वो एक plain है. आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो एक प्लेन है. प्लेन. द फ्लोर ऑफ योर रूम, आपका घर का जो फ्लोर है वो प्लेन है. सो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन. तो उसका मतलब क्या है? देखिए हम देखते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar. Two or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. ठीक है?
two or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. Two or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. Suppose ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, ये एक वेक्टर है C. All are coplanar. A, B, and C are coplanar. ठीक है? Next, number 5. Number 5. Number 5 देखिए. What is number 5? Co-initial vectors. ठीक है? Co-initial. देखिए, co का मतलब सेम. ठीक है? Co का मतलब सेम. और initial का मतलब क्या है? What does initial mean? Co means same. What does initial mean? Initial is faster. Initial is starting point, first point, starting point. Okay, so co means same, initial means starting point. So co-initial vectors हम क्या लिखेंगे? Two or more vectors. Two or more vectors are said to be co-initial. Two or more vectors are said to be co-initial if they start from the same point. If they start from the same point. Okay, two or more vectors are said to be co-initial if they start from the same point. Example, suppose ये one vector, this is one vector A is one vector, B is another vector, C is another vector. All these three vectors start from this point, same point, all of them start from here, all of them start from here, same point, all of them. So they are co-initial vector. Okay. Dimensional Coinitial vectors. Okay. Yes, sir. Next one, number 6. Number 6 a little bit important. Orthogonal. सिर्फ याद रखना है, नाम याद रखना है. This is important to remember. Orthogonal vectors. Orthogonal vectors. Two or more vectors. Two or more vectors are said
to be orthogonal if they are perpendicular to each other. Two or more vectors are said to be orthogonal if they are perpendicular to each other. Very important here. This is important. Suppose ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B. They are orthogonal. A and B are orthogonal. या ऐसा भी हो सकता है. Suppose this is one vector C. This is another vector D. D, they are orthogonal. C and D are orthogonal. A and B are orthogonal. So this is an important one. ये एक important आपको याद रखना पड़ेगा. Important one. Yes, sir. अच्छा, number 7. Number 7. Number 7 is parallel vectors. Number 7 is parallel vectors. Two or more vectors are said to be parallel. Two or more vectors are said to be parallel if they point in the same direction. Two or more vectors are said to be parallel if they point in the same direction. Okay, as an example, suppose this is a vector A, ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, and this is one vector C. ये तीनों वेक्टर देखिए, ये तीनों वेक्टर, these three vectors, they point in the same direction. Same direction है तीनों का. So lines should be parallel. देखिए तीनों वेक्टर का line parallel है, इसका line, ये line and ये line. All these lines are parallel and directions are same. Lines are parallel, directions are same. So they are called parallel vectors. नाम से तो आप लोग को पता चलता है. हाँ, सिर्फ ऑर्थोगोनल ये टर्म शायद आप लोग ने पहले नहीं पढ़ा होगा. You have not learned this term orthogonal. You have not learned this term orthogonal maybe. नहीं सुना है. बाकी सब टर्म्स तो आप लोग ने सुना है पहले. आप लोग ने सिर्फ ये ऑर्थोगोनल टर्म नहीं सुना है, बाकी ऑर्थोगोनल टर्म आप लोग ने नहीं सुना है. बाकी सारे टर्म्स तो आप लोग सुना ही है. ये इसलिए थोड़ा ये याद रखिएगा ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल का मतलब है दे शुड बी परपेंडिकुलर। ये थोड़ा याद रखिएगा, बाकी सब तो आप लोग ने सुना ही है। ओके, सो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का मतलब क्या है? देखिए, पैरेलल का मतलब लाइंस आर पैरेलल, डायरेक्शंस आर सेम। ठीक है, लाइंस तो पैरेलल है, डायरेक्शन भी सेम है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, सॉरी, पैरेलल में लाइंस आर पैरेलल, डायरेक्शंस आर सेम। अगर लाइंस पैरेलल होते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल but directions are opposite, then they will be called anti-parallel vectors. Number 8 है, 8. Number 8, anti-parallel vectors. एंटी पैरेलल में क्या होता है? लाइंस पैरेलल होगा, डायरेक्शंस ऑपोजिट होगा। सो टू वेक्टर्स are said to be anti-parallel if they point in opposite direction. Okay, two vectors are said to be anti-parallel if they point in opposite direction. मतलब, suppose vector A is like this. Vector A, ये vector A है, देखिए, and vector B is pointing in the opposite direction. ये vector B है. Then they are anti-parallel. ठीक है? Lines should be parallel and direction should be opposite. Then it is called anti-parallel. Okay, lines are parallel, direction in opposite direction, then they are anti-parallel. Yes, sir. And number 9, I am writing now. Number 9 I am writing because I cannot show you 3 dimensions. तो अभी मैं आप लोग को यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा. I cannot show you now. आप लोग स्कूल में जो टीचर आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा वो क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए. Axial vector. You ask your sir in the school, he will explain you axial vector. A vector definition अभी आप याद रख लीजिए. A vector is said to be axial if its direction lies along the axis. Okay, a vector is said to be axial if its direction lie along the axis. For the time being, you remember, अभी आप याद रखिए. For the time being, you remember, याद रखिए अभी. And when you go to school, your sir, you just request him, he will show you what it is. What is axis and how it is, he will show you. Okay, now let's see. Once again, let's see.
ये स्लाइड देखिए, वेक्टर is represented by a straight line with an arrow. Straight line with an arrow. Length of the line gives us magnitude, arrow gives us direction. ठीक है? ये देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये तीनों आप लोग पढ़िए और देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन है कि नहीं। 1 2 3 पढ़िए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज 1। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। नल वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज कोलिनियर। को मतलब सेम, लिनियर मतलब सेम लाइन पे, सेम लाइन, कोलिनियर। हाँ, नेक्स्ट देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स। को मींस सेम, प्लेनर मींस प्लेन। ये देखिए ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे है। आपका प्लेन ऑफ पेपर, you have a plane of paper and these three lie in the plane of paper, so same plane, coplanar. Co means same, plane means planar means सर plane, same plane. कोप्लेनर वेक्टर का एग्जांपल दीजिए सर, जो कोप्लेनर नहीं है। अब अच्छा, जो कोप्लेनर नहीं है, आप क्यूब देखा, क्यूब? ये सर, ये सर क्यूब देखा। ऐसा होता है। ये लाइन देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये दोनों प्लेन पे है। ठीक है, ये जो लाइन है वो प्लेन, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ा बड़ा करके। क्यूब आप लोग ने देखा है, looks like this. लुक्स लाइक दिस। ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों प्लेन ऑफ पेपर में है। क्यूब में देखिए प्लेन ऑफ द पेपर है। और ये जो लाइन है, ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप एक बॉक्स को एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, दे आर कोप्लेनर, दिस वन इज नॉट कोप्लेनर। समझ में आया? ये सर, ये और एक प्लेन में है। अगर वेक्टर ए, एक वेक्टर ए ऐसा होता है, अगर एक वेक्टर ए ऐसा होता है ए, और एक वेक्टर ऐसा है बी, तो ये वेक्टर नॉन प्लेनर हो जाएगा। सी, सी विल बी नॉन प्लेनर। ए एंड बी आर प्लेनर, ए एंड बी आर प्लेनर, सी इज नॉन प्लेनर। ए एंड सी आर नॉन प्लेनर, बी एंड सी आर नॉन प्लेनर। ठीक है, इसमें हम थोड़ा बाद फिर आ रहे हैं, एक बार फिर वापस आएंगे इसमें। कोप्लेनर समझ में आया? यस ओके, ये को इनिशियल देखिए, को इनिशियल। को का मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ये तीनों वेक्टर देखिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ। को इनिशियल है कि नहीं? ये सर, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। यस ओके, सेम स्टार्टिंग। को इनिशियल मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ठीक। ओके। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स कहाँ लिखा है मैंने? नेक्स्ट पेज सर। हाँ, नेक्स्ट पेज में ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ में आया? परपेंडिकुलर होने से ऑर्थोगोनल हो जाता है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थो मतलब 90, गोनल मींस एंगल, 90 एंगल। ठीक है, यस सर। पैरेलल वेक्टर्स तो आप सबको पता ही है। पैरेलल वेक्टर मतलब लाइंस पैरेलल होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। एंटी पैरेलल का मतलब क्या? लाइंस पैरेलल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, यस सर। एक्सियल वेक्टर आप लोग याद रखिएगा। एक्सियल वेक्टर आप लोग याद रखिए। अच्छा, ये बताइए, मैंने ड्रॉ किया ए बी,
कौन सा वेक्टर है? Which type of vector are they? A and B. Which? Coinitial. कोइनिशियल। और कुछ हो सकता है? कोप्लेनर भी हो सकता है। कोप्लेनर भी हो सकता है। कोप्लेनर, कोइनिशियल, कोप्लेनर। ये दो बताइए। सर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल हो सकता है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। और कुछ हो सकता है? सर ऑर्थोगोनल कोप्लेनर, they कोप्लेनर start from the same point, co-initial and कोप्लेनर। and coplanar. They start from the same point, co-initial, coplanar. सेम प्लेन पे है, coplanar. हाँ, तो इसमें co-initial, coplanar, यार ऑर्थोगोनल, co-initial, coplanar। ठीक है? अच्छा, इसमें एक बार आ जाता हूं मैं। इसमें एक बार आ गया ये सब में। एक बार फिर से ड्रॉ ही कर देता हूं। अब जब भी बॉक्स आएगा, आप रूम, यू थिंक ऑफ ए रूम। ये डायरेक्शन को अगर हम x लेते हैं, ये डायरेक्शन को y लेंगे और ये डायरेक्शन को z लेंगे, x y z। ठीक है? सो हियर वी हैव थ्री प्लेन्स, वन इज xy plane, one is yz plane, and another one is xz plane। अगर हम if we want to denote x axis direction, denote x axis, so हम एक टू डिनोट एक्स एक्सिस हमें एक यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? आई कैप यूज करेंगे। एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, स्मॉल आई ऊपर में कैप देंगे। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे? जे कैप देंगे, जे कैप। वाई एक्सिस के लिए जे कैप। ठीक है? एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम के कैप यूज करेंगे, स्मॉल के कैप, आई जे के। ओके, to denote x axis we will use I cap, to denote y axis we will use j cap, and to denote z axis we will use k cap। यस सर। What is the angle between I and j? सर 90 डिग्री। 90 degree, perpendicular। I and j is perpendicular, j and k is also perpendicular, and I and j is perpendicular, j and k is also perpendicular, and I and k are also perpendicular। ये देखिए, ये तीन लाइन है x y z। x y z जो तीन लाइन है, they are mutually perpendicular। So I, j and k all are orthogonal। orthogonal। This slide is important, ये आप याद रखिएगा। ये याद रखिएगा। ये तीन डिफरेंट प्लेन है, ये एक प्लेन है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है,
ठीक है, और एक प्लेन, ये एक प्लेन, दिस वन इज अनदर प्लेन। तीन प्लेन है, XYZ तीन प्लेन। ये जो येलो वाला है, the yellow one is called XY plane, yellow one is called XY plane, this green one is called YZ plane, and this one is called XZ plane. Okay, you remember this one? The yellow one is called XY plane, the green one is called YZ plane, and the red one is called XZ plane. तीन plane है यहाँ. X-axis you will remember. X-axis we denote by I cap. Y-axis we denote by J cap. Z-axis we denote by K cap. Okay. सर कैप देने पर सर मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है ना? हाँ, सर कैप देने पर मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है। क्या बताया आपने? मैं समझा नहीं कुछ। सर व्हेन वी साइन आई कैप सर, कैप हाँ, कैप जब भी आएगा इसका ये यूनिट वेक्टर है, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, इन लोगों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये सिर्फ डायरेक्शन ही देगा हमें। मतलब कहीं पे भी आई कैप आ गया तो इमीडिएटली आप लोग को ये समझना है कि ये एक्स डायरेक्शन है। अगर जे कैप आ गया तो आप लोग को समझना है कि ये वाई डायरेक्शन है। जेड कैप आ गया तो आप लोग को समझना है कि ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है? जी सर। ओके, अच्छा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सपोज ये एक वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है ए, और ये एक वेक्टर है बी। ये होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको? यस सर। सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए, ये एक वेक्टर है ए, और ये एक वेक्टर है बी। दो वेक्टर है ए एंड बी। दिस वन इज नॉट द एंगल, ये एंगल नहीं है। ये जो मैंने थीटा लिखा है, दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज नॉट द एंगल। हाँ, ये एंगल नहीं है। इसमें अगर आपको एंगल पूछा जाता है, देखिए ये होगा ए का डायरेक्शन, ये होगा ए का डायरेक्शन, और ये है एक्चुअली बी का डायरेक्शन। सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा। ठीक है, ये है ए का डायरेक्शन, देखिए ये है ए का डायरेक्शन, ये है ए का डायरेक्शन, और ये है बी का डायरेक्शन। तो एंगल यहाँ क्या होगा? ये होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। Very important point you need to remember. क्या याद रखना पड़ेगा? Very important point. That angle between two vectors, angle
between two vectors means angle between their directions. Okay, suppose ये एक वेक्टर A हो गया, ये एक वेक्टर A हो गया, ये एक वेक्टर B हो गया, B। दो वेक्टर है, तो देखिए ये B का डायरेक्शन और ये है A का डायरेक्शन। So this is the angle between the two vectors. This is the angle between the two vectors. Angle. And according to geometry, geometry के हिसाब से this angle and this angle are equal. These two angles are equal. Actually क्या है? Actually this is the angle between the two vectors. And geometry, according to geometry, these two angles are equal. These two angles are equal. Yeah, this is the angle between the two vectors, not this one. ये angle नहीं होगा. Yeah, this is the angle. So this point is important. Angle between two vectors means angle between their directions. हाँ, तो ये स्लाइड में मैं और एक पॉइंट आप लोग के लिए यहाँ लिखना चाहता हूँ। यहाँ एक पॉइंट में और लिखना चाहता हूँ। एनी वेक्टर ए कोई भी वेक्टर हो तो इसे क्या कर सकते हैं आप लोग? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो यही हो जाएगा, एरो नहीं है। एनी वेक्टर ए यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। क्या हम वेक्टर्स को कैसा ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो we'll stop here today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.